So we're waiting for a participant. Yes, we'll be resuming right. We'll be starting right away. All right, all right. Recording in progress. Ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you present here. I know आज सभी के क्लबिंग के प्लान्स थे, गेड़िया मारने के प्लान्स थे, but even after all of that, you all have joined. In fact, मिश्रा तो गाड़ी में बैठे-बैठे join कर रही है. So I must say that I am extremely thankful. Let me assure you, all of us are going to have a lot of fun together. With this, I, Ribanta Saha, your host for the day, welcome you to IntraSympulse 2022, powered by our official media partner Ishq FM in associations with PokerStars. गाइस अगर तारीख पे तारीख मांग रहे हो तो जिंदा हो तो, अगर हैदर के डायलॉग पे डर रहे हो तो जिंदा हो तो, अगर 70 मिनट जिंदगी की बेस्ट हॉकी खेल रहे हो तो जिंदा हो तो. Keeping that spirit alive, Ananya, the cultural wing of Sympulse, presents before you Lights, Camera, Action, sponsored by Caplots, powered by our official SaaS partner Sassafras, in association with Cornitos. Before we move any further, we would like to share with you last year's online Sympulse journey. वैसे तो मार्केटिंग टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर हम भी किसी से कम है के. Guys, let's have the video. Fireflies, a million little pieces, feeds the dying light and brings me back to life. In your eyes, I see something to believe in. Your hands are like a flame, your palms are sweet as pain. Let the darkness lead us into the light. Let our dreams get lost, feel the temperature rise. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite, like a starship speeding into the night. You and I get lost in the infinite lights. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. One touch and I ignite. One touch and I ignite. That was a really exciting video. चाहे मैं कितनी भी बार देख लूं, I always get goosebumps. Before we kickstart the performances, let us welcome our honorable judge for the day. We have with us Shreyansh Agarwal. Shreyansh, who floored the audience and impressed the entire audience with his jaw-dropping performances and on multiple occasions, including SCMS's very own theatrical production of Gulal and Rakta Charitra. Let us welcome one of our very own, Shreyansh Agarwal. If you could please speak a few words, Shreyansh. Hi guys. So as I said before, I graduated last year from Symbiosis. I am from Assam. I studied in a boarding school and I did a lot of theater there. I started participating in at the age of 9, and an interest grew. Initially it was about fame and everything, but slowly competitions and street plays and stage plays, and it just grew, and I kind of developed a passion for it. I have applied for the National School of Drama, and the results, I'm awaiting for them. So yeah, that is a little about me. Currently I'm in Assam, and I think we can start with the performances. Thank you so much. Thank you so much, Shreyansh. Before we move any further, I would like to congratulate all the participants for being a part of this event. We are beyond excited to watch all your performances.
I request everyone to keep their microphones on mute. अब देखो इसके दो फायदे हैं. अगर किसी को घर पे डांट पड़ रही होगी तो पब्लिकली किसी को पता नहीं चलेगा और इवेंट भी स्मूथली कंडक्ट हो जाएगा. So without any further ado, let's dive right into the performances lined up for today. Up first, our first performer of the day is Adar Sethi from Sympulse Center for Management Studies, Pune. Hello. Hello. Mic testing 1 2 3. Hello. आवाज आ रही है आप लोगों को? Hello, 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 hello. UN Council Resolution number 47, Amendment 48, Article 2 of the Geneva Convention, and Article 370 of the Indian Constitution. सिर्फ एक सवाल उठता है, सिर्फ एक. हम हैं कि हम नहीं? हम हैं तो कहाँ हैं, नहीं तो कहाँ गए? हम हैं तो किस लिए कहाँ गए और कब? जनाब, हम थे भी, हम थे ही नहीं. चुचपा हो गया हमारे साथ. चुचपा जानते हैं आप लोग? एक बार बैंक में डकैती हुई, टिश क्या हो. डकैत ने कैशियर किसी पे पिस्तौल रखे और बोला पैसे दे वरना मौत पे. कैशियर ने सारे पिस्तौल के डकैत को दे दिए. डकैत वही पैसे लेके दूसरे काउंटर पे गया. एक्सक्यूज मी, एक फॉर्म मिलेगा, मुझे अकाउंट खोलना है. ये होता है चुचपा. बेशरम गुस्ताख जैसे अफस्पा. सावधान. Armed Forces Special Powers Act Section 5 Rule 4.a. Any commissioned officer, Chief Janab, warrant officer, Chief Janab, non-commissioned officer, Chief Janab, or any other person of the equivalent rank in the armed forces may, in a disturbed area, if he is of the opinion that it is necessary to do so for the maintenance of public order, and after having given due warning as he may see necessary, fire upon or use force, even to the causing of death, against anyone acting in contravention of law or order. Law and order. Law, order, law, order, 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 law, order. ना law है और ना है order. जिसका law है उसका order. Made on order, law and order. इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर खेला हमसे border. अब ना हमें छोड़े हिंदुस्तान, अब ना हमें छोड़े पाकिस्तान. अरे कोई तो हमसे भी पूछे कि हम क्या चाहते हैं, उस पार भी लेंगे, हम लेके रहेंगे आजादी. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके. जनाब, हम इम्प्रेस थे भी कि थे भी नहीं. देखो ये बताने का काम मेरा तो है नहीं. लेट्स मूव स्ट्रेट ऑन टू आवर जज श्रेयांश. व्हाट डू यू हैव टू से? I think he was very soft with his voice. Is there somebody next to room or what? What is your name? Adhar. Your volume, it was very low. Yeah, you did a Heather Chutzpah thing. I think you rushed with your dialogues, and maybe because you were the first participant, and the video is also slightly, deterring. It's connecting and not connecting. Yeah, we can move on. Thank you so much, Shreyansh. We'll move on to our next participant for the day, Avantika Parekh from Sympulse Center for Management Studies. मैं तेरा सब कंफ्यूजन दूर करती हूँ. Let me start by introducing myself. My name is Meenalochini Adakasundaram, daughter of Durgeshwar Adakasundaram. वो कोमन एरिया में मेरा फादर का बहुत रिस्पेक्ट है. पेरिया थल्ले इल्ले डॉना. ये चारों का चार मेरा पीछी इसलिए सुन रही. बात इसलिए सुन रही है क्योंकि ये मेरे अप्पा का गुंडी लोग. Yes, but don't worry, he's my cousin brothers. So mean, okay? You can't tell like that. ये मेरे अप्पा ने इनको मेरे को कोम्बन रिटर्न ले जाने को भेजी. वो मेरा कल्याण करवा देना चाहती.
You know, marriage? Yeah. वो भी थंगाबली से. तभी तो घर से भागा ना. थंगाबली अप्पा का फ्रेंड का बेटा. शादी करा तो अप्पा का फ्रेंड का विलेज भी अप्पा का. अप्पा becomes double powerful. तभी वो मेरा शादी करवाना चाहती. But I don't even want to get married. He just doesn't understand. अब पूरा बात समझ में आई? Brilliant performance. मैं तो बस कहूंगा कि do not underestimate the power of a ड्रामेबाज score. Let us ask Shreyansh what does he have to say. Shreyansh? Yeah, it was nice. Chennai Express and all. I like she put effort by putting the Chennai Express behind and sitting Palati Marke, to give that train effect. Just give me a minute, okay? I need to put the things. No, yeah, 1 second. Right, sir. Avantika, can I have a word with you tab tak? Hi. Hi, Avantika. Is Chennai Express your favorite movie by any chance? Yeah, exactly. I Yeah. love Deepika. Exactly. You don't like Shah Rukh Khan? Yeah, I do. But I Thank you. really admire Deepika. Thank you. You know, right? कि उस टाइम पे दीपिका पादुकोण को कुछ डिप्रेशन टाइप का हो गया था, Yeah. है ना? I did not know that for like a very long time. But definitely, I mean, the way she molded herself into the accent and the way you did that, it was very similar. मतलब मैं जज नहीं हूँ, but let me tell you, the way you molded yourself, commendable. मुझे तो बड़ा मजा आया देख के. Thank you so much. I Yes, really love her every movie. She's I my agree. spirit animal. I agree. In fact, one of my biggest dreams, मतलब वैसे romantic dreams यही है कि मैं कहीं किसी मूवी थिएटर में प्रीमियर में जाऊँ, मेरा ये ब्रेसलेट किसी के चुन्नी सटक जाए. But restraining order लग जाएगा मेरे पे. Let's hope. Yeah, let's hope. Thank you. Shreyansh, are we good to go? Yeah, we can carry on. Good. Great. Up next, we have Harshit Chabra from Symbiosis Center for Management Studies. Start. हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हेलो 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 हेलो. UN Council Resolution 47 of 1948, Article 2 of the Geneva Convention, Article 370 of the Indian Constitution. सब बस एक सवाल पूछते हैं, सिर्फ एक. हम हैं कि हम नहीं? हम हैं तो कहाँ हैं और नहीं है तो कहाँ गए? हम हैं तो किस लिए और कहाँ गए तो क्यों तो कब? जनाब, हम थे भी कि हम थे नहीं. चुप्पा हो गया हमारे साथ. चुप्पा समझते हैं आप लोग? एक बार एक बैंक में डकैती हुई. डिस्काउंट. डकैत ने कैशियर के सर पर बंदूक रखकर कहा, या तो पैसे दे या तो मौत दे. कैशियर ने झट से सारे पैसे उठाकर डकैत के हाथ में रख दिए. डकैत चलकर अगले काउंटर पर गया. एक्सक्यूज मी, एक फॉर्म दीजिए, मुझे नया अकाउंट खोलना है. इसे कहते हैं चुप्पा. बेरहम, गुस्ताख, अफस्पा. सावधान. According to the Armed Forces Special Act, Section 5, Rule 4.a, any commissioned officer, जी जनाब, any warrant officer, जी जनाब, any non-commissioned officer, जी जनाब, any other officer of an equivalent rank Okay, I think that was it. I think that was the video that we got. Let us move on to our judge, Shreyansh. What do you have to say? Okay, so I think that was the second Heather Chutzpah monologue for the day. Yeah. We can carry on. I'll review towards the end for everybody. Okay, as you say. Yeah. Up next, we have
Swastik Mohan from Symbiosis Center for Management Studies. एक सेकंड रुको, है ना? काश कि मैं तुम्हें बता पाता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ. 1 second. Wait. I love you. I love you very very much, नैना. और लिखा है I love you and मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ. तुम पास नहीं होते तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूँ, हर घड़ी, हर पल. मेरे नैना मेरी नैना को ढूंढते. इसे प्यार कहो, पागलपन या मेरे दिल की धड़कन, मेरे लिए एक ही बात है. प्यार तो बहुत लोग करते हैं नैना, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं. मैं तुम्हें भूल नहीं सकता. मैं तुम्हें भूलना ही नहीं चाहता. तुम मेरी हो. मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करूंगा और मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगा, और उसके बाद भी. सच. ये लिखा है उसने अपनी डायरी में. रोहित ने. दिल कैसे दुखा. कितनी खराब हैंडराइटिंग है यार तुम्हारी. SRK का ये legendary dialogue never fails to strike a chord. Let us move on to our next participant, but before that, let me tell everyone, abhi tak, I am really, really enjoying the show, and all of you have done a very, 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 very wonderful job. Phenomenal job, everyone. Moving on, we have Mishka Tillu from Symbiosis Center for Management Studies, Pune. पता है, मैं ना बहुत अच्छी हूँ. अपने मम्मी डैडी की हर बात मानी है मैंने, टीचर्स की हर बात मानी है मैंने. मतलब कभी एग्जाम में चीटिंग नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला. विजय की, मतलब तुम जिसका नाम लो उसकी हर बात मानी है मैंने. वो हमारे स्कूल के सामने के कॉन्वेंट की लड़कियाँ इतनी इतनी सी स्कर्ट पहन के आती थी, मतलब फोल्ड कर करके. हमने ना कभी ऐसे कोई गलत काम नहीं करे हैं. मतलब विंकी के लड़कों को जाके देखना, ये वो, हमने ऐसे कभी कोई गलत काम नहीं करे. ठंड है यार. ठंड इंडिया में भी होती है. मैं इंडिया से हूँ, राजौरी से मैं अपने हनीमून पर अकेले आई हूँ. मेरे साथ और कोई भी नहीं है, क्योंकि उसने मुझे अकेले छोड़ दिया. मैं यहाँ अकेले हनीमून पर आ रही हूँ, अकेले रोड क्रॉस कर रही हूँ, अकेले आईफिल टावर भी देख रही हूँ, अकेले गुंडों से फाइट कर रही हूँ. पर पता है, मैंने भी ना अपना बैग नहीं छोड़ा. उस जेब कतरे को ना ऐसा सबक सिखाया मैंने, मतलब तुम समझ लो, उससे ना वापस दिल्ली वालों से कभी पंगा नहीं लेना है. विजय लक्ष्मी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम सब सुधर जाओ. बच्चों, ये जो तुम्हारे सब पंगे हैं ना, एक दिन ऐसा फंसोगे ना. फंस तो मैं गई हूँ. उसने शादी से एक दिन पहले मुझे छोड़ दिया. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया मेरा. Absolutely queen level की performance. Let me reiterate everyone that Shreyansh will be giving his entire review towards the end for all the performances. But let me again remind, phenomenal job everyone. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. जैसे देखो, कोई भी त्योहार बिना भगवान का नाम लिए पूरा नहीं होता, कोई भी इवेंट बिना स्पॉन्सर्स का नाम लिए पूरा नहीं होता. So now that we've reached halfway through our event, I would like to take a moment to thank our sponsors who have made this event possible here. This event is sponsored by Cathlots, powered by our official SaaS partner Sassafras, and in association with Corditos. Up next, we have Ronit Bami from Symbiosis School of Economics. Just a minute, okay? I'll just score it once. Tab tak, can I have a word with Swastik, please?
Yes, sir. Right here. सर सर क्या किया आपने सर ये क्या क्या you do understand ना that वो dialogue hits a very 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 special nerve every SRK fan. Dude, कभी SRK सच्ची fan, में right here, SRK. एग्जैक्टली मैन एग्जैक्टली बट कभी किसी लड़की को सच्ची में से बोलने का सोचा है सिर्फ फिर सिर्फ क्या कैमरा को बोलने की हिम्मत है नहीं भाई. नहीं फिर क्या पॉइंट है यार ये एसआर दिस इज द वन थिंग दैट वी कैन टेक फ्रॉम एसआर के ना अलग ही कॉन्फिडेंस में बोलता है वो व्हेन ही हैज टू से बट ये हम कभी नहीं कर पाएंगे कभी वैलेंटाइंस डे अकेला चाम निकलेगा उनका अलग है, उनका चाम अलग है भाई. एग्जैक्टली एब्सोल्युटली आई एग्री श्रेयांश आर वी गुड टू गो ग्रेट थैंक यू स्वास्तिक great talking to you up next we have Ronit Bami from Symbiosis School of Economics. Okay, so we are facing some technical issues with Ronit's video. So we'll move on straight away to our next participant, Vidisha Tayade from Symbiosis Center for Management Studies, Pune. यार क्या बताऊं, नहीं क्या बताऊं, यही कि सारे सपने टूट गए मेरे. प्राइमरी में जब पहली बार धूम देखी थी ना, तब से सपना था मेरा कि अपने चोर बॉयफ्रेंड के स्पोर्ट्स बाइक पे ऐसे चिपक के बैठेंगे कि मोहल्ले की 4 आंटियां बोले देखो लड़की तो हाथ से चली गई. पर यार तो जॉन अब्राहम के पास हाय अबूजा नहीं पिंक स्कूटी है जो उसे चलाने भी नहीं आती. यार पीछे बैठता है वो मेरे, और वो भी दोनों टांगे एक तरफ करके, क्योंकि उसकी स्कूटी पे एक ही फुटरेस्ट है. मैं कसम से बता रही हूँ ये सारे लड़के ना एक जैसे होते हैं सारे. साला सब कहानियों का दोष है ब्लडी फीमेल बैशिंग बॉलीवुड. प्यार का पंचनामा ही देख लो, 5 मिनट तक यही बोलता रहता है कि लड़कियाँ ये करती है, लड़कियाँ वो करती है, जीना हराम कर दिया. लड़के क्या करते हैं कोई बताता है? नहीं, मैं बताती हूँ. ब्रोमांस के नाम पे बीच रोड पे एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखते, और कुछ तो बुपिंग की फिंगर पकड़ के झुलाते, और इन्हीं दोस्तों के सामने अगर गलती से इनका हाथ पकड़ लो ना तो ऐसे छुड़ाते हैं जैसे करंट लग गया, क्योंकि सख्त लौंडे की इमेज मेंटेन करनी रहती है ना इन दोस्तों के सामने. और अगर कभी इनको आई लव यू बोल दो तो मी टू करके टाल देंगे, लेकिन दारू पी के फ्रेंड के बिल्डिंग के सामने जाके आई लव यू ब्रो, तू ही मेरा यार है करके चिल्लाते रहते. शॉपिंग नहीं करने देते यार ये लोग, खुद तो 4 कपड़े लेके फ्री हो जाते हैं. अरे यार तुम्हारे पास चॉइस ही कितनी है, तुम्हारे जितनी कपड़ों की वैरायटी है ना उससे ज़्यादा तो मेरे लिपस्टिक के शेड्स है, तो टाइम तो लगेगा ना शॉपिंग करने में. लेकिन ये कौन समझाए इन्हें. और अगर कहीं बाहर जाना हो तो डीओ मार के खड़े हो जाएंगे, और अगर कोई स्पेशल ओकेजन हो तो नहा भी लेंगे, लेकिन हर 5 मिनट पे अलार्म क्लॉक की तरह चै 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 करते रहेंगे. बेबी रेडी हो गई, चल ले क्या, हाँ जी चलो. अरे यार अब इन्हें कौन समझाए कि नो मेकअप लुक में भी कितना मेकअप होता है, काजल, मस्कारा, आई शेडो, और दैट इज जस्ट फॉर द आईज. और अगर कभी मैंने एक दिन काजल नहीं लगाया तो पूछते बेबी बीमार हो, क्या हुआ. एक तो मुझे समझ में नहीं आता इतना सारा अटेंशन टू डिटेल्स तब कहाँ चला जाता है जब हम ट्रायल रूम के बाहर खड़े होते हैं और पूछते बेबी कैसे लग रहे हो, तब तो फ़ोन में घुसे रहते हैं और बोलते हाँ सही है. एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये लोग फ़ोन में करते क्या है यार. नहीं, जब ट्राई करना होता है तो सुबह 4 बजे तक मैसेज आता है, सो गई बेबी, सो गई क्या, लगता है सो गई, गुड नाइट, प्लीज़ उठ जाओ ना. अरे यार, लेकिन जैसे ही लड़की ने हाँ करा वैसे ही सारा इंटरेस्ट ख़त्म, क्योंकि अब तो कर ली दुनिया मुट्ठी में. अब तो सारा इंटरेस्ट सिर्फ इसी में है कि क्लैश ऑफ क्लैन में किस क्लैन पे वॉर करना है, एफबी पे किस फ्रेंड को किस मीम में टैग करना है, और कौन सा पीजे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करना है. अरे यार इन्हें कोई समझाओ यार, इस उम्र में हाथी चीटी जोक्स आर नॉट फनी, पप्पू जोक्स आर नॉट फनी, जंतर मंतर पे जाके आंटी आओ क्या बोलना चिल्लाना इज जस्ट नॉट फनी. ओके ये सीधा अटैक कर दिया हमें. मेरे पास बोलने के लिए तो अभी कुछ नहीं है. I will move on straight to our judge, who is a man, by the way. Shreyansh, what do you have to say? Firstly, that was Vidisha, right? That Ronit is the one we missed, right? Yeah, correct. I would reiterate again. Ronit, we missed, so we'll send it to you. Probably send it to you or play it at the end, whatever is convenient. Yeah, but this one was Vidisha Tayal, right? This is Vidisha Tayade, yeah. Tayade. Right. Yeah. This video was there were no pauses or anything.
Yeah, and I liked how she was able to convey the whole thing without really getting frustrated or without showing a lot of anger. It was very smooth. Yeah, let's move on. Okay, thank you, sir. We'll move on to our next participant, Viraj Jain from Symbiosis Center for Management Studies. मैं मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से जब बाहर देखता हूँ, मेरे गांव के रंगों में लिपटी एक नई ज़ारा को देखता हूँ। मेरे ख्वाबों को पूरा कर अपने ख्वाब भूल चुकी है वो। मेरे लोगों की सेवा करते अपने लोगों को छोड़ चुकी है वो। उसका दामन खुशियों से भरने का जी करता है। उसके लिए एक नई जिंदगी जीने का जी करता है। वो कहते हैं कि मेरा देश उसका नहीं, फिर क्यों मेरे घर वो रहती है। वो कहते हैं कि मैं उस जैसा नहीं, फिर क्यों मुझ जैसी वो लगती है। मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से जब बाहर देखता हूं, वो कहते हैं कि वो कोई नहीं तेरी, क्यों मेरे लिए वो दुनिया से लड़ती है। वो कहते हैं कि मैं उस जैसा नहीं, फिर क्यों मुझ जैसी वो लगती है। वो कहते हैं कि मैं उस जैसा नहीं, फिर क्यों मुझ जैसी वो लगती है। Wonderful performance. बहुत मजा आया देख के. We'll move on to our next performer for the day, Yeshi Shah from Symbiosis Center for Media and Communications. तो खत्म कर दो ना, just end it. पेरेंट्स हो ना, खत्म कर दो. बच्चे पालना इतना टफ है तो just end it ना, just end it. किसने कहा है पेरेंट्स बने रहने को? किसी ने कहा है? एक तो काम ठीक से शुरू नहीं किया और फिर आई डोंट नो क्यों कंटिन्यू किए जा रहे हो. हाँ, just end it ना, just end it. जब बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आप उन्हें आराम से छोड़कर चले जाते हो और फिर पूरी लाइफ ऐसे कंप्लेन करते हो, उसने ऐसे मुंह किया, उसने ऐसे किया. बच्चे पैदा करना किसका आइडिया था? हाँ, आपका. करेक्ट. और फिर जो चाहा उनके साथ किया. ओके, व्हाटएवर यू वांटेड. और फिर ब्लेम भी हम ही पे करते हो. हाँ, एंड यू से टफ है. व्हाट डू यू मीन टफ है? टफ है माय फुट. How could you just abandon me? हाँ, कैसे किया आपने ये? हाँ? कैसे मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए? और वापस भी इसलिए आए क्योंकि I failed the second standard. Yes, I failed the second standard. बाप रे, shame. Dumb Kyra failed the second standard. इतनी शर्म की बात थी आपके लिए, हाँ, कि आप आ गए all the way to India just because I failed the second standard. और जब मैं खुश थी, फाइनली पापी और नानी के साथ खुश थी, आप मुझे वहां से भी ले गए, उनसे भी दूर कर दिया. क्यों? यस, पद्म भूषण just for that. एक पटाखा है मेरे पास, एक्चुअली बॉम्ब है. आर यू रेडी? हाय, आई एम गोइंग टू थेरेपी. यस, मैं दिमाग के डॉक्टर के पास जा रही हूँ. तो आप में से कोई अगर मेरे पीठ पीछे मुझे पागल बुलाना चाहते हैं, जस्ट से इट टू माय फेस. हाँ, जस्ट से इट टू माय फेस. यस, से इट. Kyra's gone mad. She's gone cuckoo.
I mean, काफी टाइम से बहुत मस्ती चल रही थी, but unbelievable. Uh, it is really, really, as an actor, it's a huge compliment that if the audience starts feeling your emotions with you. So we had a technical issue previously with Ronit's video, but before we try to address that issue, I would really like to talk to Yeshi if it's possible. Do we have her here with us? Hi, Yeshi. First of all, already a huge fan. Already a huge fan. Lovely performance. So, how long have you been acting for? Okay, not that long, but I mean, I have been doing theater. Yeah, so you've been into theater only or film-based productions as well? Like, yeah, I mean, I've done like I've done a few things here and there. I've been part of a small web series and stuff also. So that You've been a part of it, and that is a small thing? it was a very small cameo, but yeah. But which web series? Hostel Days season 2. You were a part of Hostel Days? And you're telling this to us now? Okay, after this event, I want you to sign your autograph and send it to me as a PDF. I'll sell it for like $100 each. Okay, does that work? Does that work? Yeah. Okay. Wonderful job. You've already made a fan. You've already made a fan. Trust me. Yeah. Do we have Ronit's video with us? Is it possible for us? Okay, I think we are still facing some issues with Ronit's video. Okay, so I think there is still some issue with Ronit's video. So let me just talk to one more participant because मेरे पास काम ही किया है शाम को. Yes, let's have a word with Viraj here. Hi, Revanta. Hi Viraj, how are you? I'm good. How are you? Formality हटा देते हैं. I know him. I know him. He is my school friend and in my college. So इसका तो मुझे सब history पता ही है. But you tell me, how long did you take to prepare for this role? I think 2 hours, 2.5 hours. 2 hours behind the character. And कैसे did you copy it from the movie देख के या फिर कुछ अपना अपना improvise किया? I improvised my script as well. मतलब मैंने मूवी 2 या 3 साल पहले देखी थी. And ये एक specific scene था जो like which really touched my heart. मतलब I got so emotional when Shahrukh Khan was in jail and जब प्रेसिडेंट जाती है और उससे सब पूछती है तो like ये सीन मेरे दिमाग में तब से ही ऐसे बैठा हुआ है तो I got to know कि मोनोलॉग बनाना है तो my first instinct was कि यार यही बनाना है तो like that was the whole and about the script yeah I improvised a little मतलब एकदम word to word same dialogues नहीं है बीच में थोड़ा सा करके खुद का जो मुझे लगा जहाँ better लग सकता है I try to do my best. ग्रेट मतलब मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि हमारे पास बहुत सारे एसआर के फैंस हैं इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है थैंक यू सो मच बिफोर आई मूव ऑन आई एम सीइंग कि कुछ लोगों का कैमरा ऑफ हो गया यार तुम्हें बोर कर रहा हूँ यार तुम लोगों को मैं कैमरा क्यों ऑफ हो रहा है लोगों के अच्छा लग रहा है मुझे तुम लोग की शक्लें देख के आदिर इज योर कैमरा इज ऑफ मैन कैन आई सी यू इतना बढ़िया परफॉर्म किया यार क्या हो गया okay I think we're good to go with we're good to go with the video. Great. So let us have Ronit Bami from Sympulse School of Economics. Okay, I think ये तो नहीं होगा play आज. So let us just I would request Shreyansh that we would send you this video via a drive link, and we would request you to assess it from there. Is it okay? Okay, you'll be sending it to me later, right? Yeah, we'd be sending it. To you. But while we are managing that, we would really like you to give a few comments to all our performances. Yeah, so I've written a few notes. Okay, so as Viraj was on when he was talking to you, so I think the
first and foremost thing is that Viraj also called it monologue. It's not a monologue. It's a mono acting competition, right? It's not just a dumping down of dialogues after dialogues. You need not necessarily have any dialogues at all. You could do mime. See, today we are restricted by pandemic and stuff, and we can't physically be doing it, but we also have more advantages, right? It's a mono act, so you could decorate your surroundings, you could go with costumes, you could go with different lights, you have that kind of advantages. But it's like today, I don't know if you all were listening to everybody, but I think apart from Yashi's audio, everybody else's audio was slightly below the par. And because it was a pre-recorded video, I was expecting that the audios will be better, the quality of audios will be better. Some of the audios were not up to the mark. It was very low, and it's a pre-recorded video, so the expectations are better. If it was live, maybe I wouldn't have factored it in, but because it was a pre-recorded video, that okay. Second, it's a monologue, a mono acting, not a monologue. So be creative with it. You could go original. Most of you have done films. I think all of you only done monologues from films, but that is not what mono acting is, right? You could like paint your face, you could go all crazy and wild. It's fun. Should enjoy that 1 minute. It's very like, I mean, you could dumb down dialogues only, but your own dialogues, your own views on something, you'd enjoy more. And when Yashi was also doing it, she was doing it from a chair, and I think that kind of restricted her. When she was moving, the chair was also slightly kind of like, not allowing her to like freely talk. Maybe you should have had somebody else hold the camera and record it. So these are small, like small yet like little extra efforts that could have enhanced your videos. The fact that two of you did the Heather mono act, I will not it's fine. It's two different pieces to me, so that's fine. Harshit's getup was nice. Also, maybe a little change in language and in period. Like you could have picked up a piece from a 1960s or a 1970s English film or a Hindi film itself. I mean, I was expecting more creativity, and I would like to know your opinions. Like how did you guys like find participant? I think most of the participants are from Symbiosis only, or different colleges also. Most of them are from Symbiosis. So SCMS, we have a participant from SEC and from SCMC as well. And there is no other college participating right now? No. It's only SIU. All right. Yeah. All Mozumdar students. All right. Rest. If I had to go individually, Viraj, I don't know why you. I mean, the lighting and all were good, but your audio, your dialogue was not matching up to the effect you were trying to create. It was not in sync. Your video and your audio. Your video was better. Your audio was again below. Um, Vidisha, I liked Vidisha's. I'm not gonna lie. It was not anything new, but it was very smooth, and she took time to, correct her. It was very natural, correct her hair and all, and yeah. Um, who was Mishka? Can I see her face? I think I'll have to go from here. Okay, you have a mask on. Okay. Mishka, you did on. I forgot yours. Yeah. The Queen wala Avantika dialogue. did on.
Queen. The Queen Yeah. wala, right? Yeah. Yeah. And swastik and all. Yeah, rest everything is fine. Yeah. So I mean, you could all that only. Yeah, creativity, and it's a mono act. The reels that people make, it's basically that. It's mono acting. If you're doing it alone, that is it. That is the criteria. You could do anything with it. So yeah. Um, Anything you guys would like to ask any of the participants? Guys, you can put it on the chat box if there's anything you want to ask. Or you can just ask us to unmute you. We would. I don't know why, but I am also speaking so seriously. I'm not able to joke around and all right now. Yeah. कोई नहीं, उसके लिए मैं हूँ. हाँ, उसके लिए तुम तो हो. Hey guys, can we take a picture? Okay, I need it for the event report. Okay, so I'll just have a word with. Let me see who I missed out. I'll have a word with Vidisha first. If there's anything she can ask you, she can do that as well. Can I have Vidisha? We can have her spotlighted with us. Hi. I got Hi, Vidisha. Rohit's video, so I'll be Hello. watching that. Okay. Okay, great. I'll only talk to Vidisha. So, okay, Vidisha, how long have you been acting? No, this was my first time ever. This was your acting. first time? Yes, I've. Acting ever? Yes. तब तो मतलब बात अंदर से निकली है, दिल से निकली है ये बात. तब तो मतलब दिल से आई है बात है. But are you sure this is the first time you've been acting? Yes, yes. I won't lie, but I haven't heard this dialogue before कहीं भी. So is this like original or या मैं No, outdated हूँ? no, it's from one of the series on YouTube. The channel Gully Up, if you know. अच्छा नहीं मतलब मैं outdated हूँ. मतलब मुझे बुढ़ा बुला दिया मुझे पब्लिकली. ठीक है, कोई नहीं. But I have to say it was so heartfelt. मुझे लगा सच्ची अभी लैपटॉप से निकल के मारने आओगी हम सबको. सारे लड़के ऐसे नहीं होते. But again, commendable job, and not only Vidisha, I think everyone. I'm like really, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बड़ी-बड़ी बातें तो कर रहा हूँ, पर अगर कोई मुझसे कहता कि तू मोनोलॉग डाल दे ऐसे and लोग बैठ के देखेंगे, तो मैं टाइम लगता मुझे सोच के कुछ करने में. But great, thank you so much, Vidisha. Great speaking to you. Great speaking to you. Can I have Adar here, please? Hi Adar, how are you? Just fine. सर आपका भी फर्स्ट टाइम था? एकदम फर्स्ट टाइम. हाँ सबका फर्स्ट टाइम होगा अभी. जितने अच्छे परफॉर्मेंस है सबका फर्स्ट टाइम होगा आज. नहीं मैंने तो किया ही नहीं कभी. एक्चुअली मोनो एक्टिंग जब देखा पहली बार तो आई वाज लाइक नहीं इसमें पार्ट है. बाकी ट्राई करते हैं. There's some issue with your audio. There's some issue with your audio, Adar. But एक बार सेट कर ले. हेलो. हाँ. Hello. 1 2 3. Hello. हाँ. आप कुछ बोलो? Yeah. Like I'm right. Yes. I was saying like I was not going to participate in mono acting at first, but जब पहले भी देखा लगा like जो चांस लेते हैं क्या करते हैं. So like I gave my entry. है. मैं बता रहा हूँ ऐसे ना हर क्लास का ना एक टॉपर होता है जो बोलता है पढ़ता ही नहीं. अरे कल 3 मिनट के लिए पढ़ा मैं और आज फुल आया मेरे बाय चांस. बट डूड well done, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया. And honestly that dialogue I'll tell this to Harshit also. Can I have Harshit also here? हाँ, both of you, it takes a lot of courage to do Heather वाला dialogue publicly. मैं अपने वॉशरूम में दरवाजा बंद करके भी ना करूं. So I must say that commendable job. मैं तो क्या ही बोलूंगा यहाँ पे, but मुझे तो बहुत मजा आया and फ्री में ही मुझे आधे बॉलीवुड के दर्शन हो रहे हैं, तो इससे बेटर क्या हो सकता है. Great, thank you so much. Thank you. Yes. और कोई है जिसको मैंने परेशान नहीं किया अभी तक? मिश्का का है? Hi, Rebanta. Hi, Mishka. Have I troubled you enough for the day? Honestly, yes. Okay. जा रहा हूँ मैं मंडे के बाद. हाँ, तो you knew that this part is actually a part of a meme. The role that you did, उसका एक part is a meme.
Yes, I कैसा do लग know रहा है अपने आप that. का मीम बनवा के? I'm more than content doing that, honestly. नहीं, but again मैं तो Because एक see, सीन only memes get hit. So पता है, there was a reason why मिश्का को मैंने लास्ट में बोला मेरा कंटेंट खत्म हो रहा है, अब मिश्का बोलना शुरू करेगी। और उसने अगर शुरू किया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, तभी मैंने मिश्का को लास्ट के लिए बचा के रखा था। बट क्वीन देखी है? obviously it's my favorite. कंगना रनौत पसंद है? As an actor, yes. Very good. Good answer. Very, very safe answer. Very safe answer. But I have to say again, मैं मानता हूँ ये बात, जब when you were acting, एक सेकंड के लिए मुझे सच्ची में लगा था कंगना रनौत एक्टिंग कर रही है, और ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ। I I seriously mean, am I saying. do have the curls and everything, natural वो factors. देखो, मुझे लगा थोड़ी मॉडेस्टी आएगी यहाँ पे, लेकिन नहीं नहीं यार, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, पाएगा कुछ भी नहीं हुआ, हाँ पता है, चल। वो होता है ना, like you did a really good job, I know. अच्छा, मुझे आपके घर में कोई आया, I'll talk to him. Yeah. No, it's fine. Yeah, go ahead. Yeah, that's go ahead. हो गया, मेरा कंटेंट खत्म हो रहा है धीरे धीरे। Oh, okay. It's okay. No, Yeah. नहीं हो रहा होस्ट तो बताओ, हम आ जाएंगे अनन्या में, कर लेंगे host. बता क्या करें फिर, क्या करें फिर, बताओ, कर ले जॉब co-host फिर। छोड़ दो। हाँ करेक्ट, अब तुम्हें जॉब छोड़ने की नौबत आ गई है, बचाओ मुझे। अभी श्रेयांश, are we through? Okay, no offense there, Ravanta. You Aye, were come on. amazing today, so yeah, Good, kudos. thank you. I know. Doing it the Mishka way. Okay, Ronit, can I have you here? Yeah, Revant. Hi Ronit, how are you? I'm fine. How are you? I'm great. मुझे तो मजा आ रहा है सबके एक्टिंग देख के। Your video did have a technical lag, तो nervous Yeah, are I you? understand. Are you nervous or anything? No, not nervous, but then yeah, so it's all ठीक right. है, तो just for the sake of it, is there any 10-second, 20-second thing that you want to do, want to show everyone, just to show कि देख लो भाई मेरा वीडियो नहीं आया पर कंपटीशन तो मैं हूँ अच्छा खासा है। Yeah, बिल्कुल नहीं हो पाएगा. Like it's like I have done the entire like the mono acting standing up, so it really won't look well here, sitting down and doing it. अच्छा, but फिर भी I mean, okay, what is your favorite movie? Fluctuate होते रहता है. I'm really not biased for one movie. So, Favorite but if I actor had कौन to है? say, maybe the अच्छा sorry, हाँ. yes sir. Maybe the Batman trilogy, Hollywood. Sir, Bollywood, please. Tamasha. Tamasha, there you go. So, and favorite actor? I think Nawazuddin Siddiqui. Yeah. Oh. And his favorite movie? Gang of Wasseypur. हो जाए डायलॉग, बीप हम कर देंगे, हो जाए डायलॉग, चलो बीप हम लगा देंगे। नहीं पाऊंगा justice. And that I agree, and it's actually very commendable. By the way, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्स करूंगा मैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नोएडा में मेरे फ्लैट के साइड वाले, उसमें उधर का हमारे स्कूल के साइड वाले वहाँ पे वॉचमैन था। मैंने पता नहीं क्यों बोला ये, बट मुझे फ्लेक्स करना था ये। बट वहां से ही बिकमिंग एन एक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हिम, कमेंडेबल। एंड मैं ये भी चाहता, हम्बल फ्लेक्स, हाँ भाई स्वास्तिक, ठीक है, तुमने तो कर ली ना एक्टिंग अपनी, फ्लेक्स मैं कुछ कर लूं मैं कुछ कर लूं हाँ, तो आई जस्ट वांट टू से दैट आई नो कि इधर से ही बहुत ऐसे लोग होंगे जो बाद में बॉलीवुड में जाएंगे, सबके सब याद रखना मुझे कि तुम लोग को एंटरटेन किया मैंने 1.5 घंटा बैठ के यहाँ पे, ठीक है? ग्रेट। श्रेयांश, are we good to go? Yeah, hi. So I saw Ronit's video, and I have to say it was pretty good. Comparing with whatever we had today, whatever the standard of the show has been today, Ronit's was good. There was one fault. Ronit, I think you left your fan on, man, while recording. And did you? You'll have to unmute him. Yeah, Shreyansh, actually, I realized that after recording, and Yeah, I had an and option to have like a retake, but then I thought that was like a perfect one. So should have gone for a retake, man. See, I'll tell you what, it's small things like these only, no, that make a difference. Like, I couldn't notice it towards the end, but in the beginning it was pretty obvious that, you know, there was a fan, and there was this, it disturbs the lighting as well, right? Yeah. So yeah, that yeah, बाकी लोग तो यार
yeah, so that's all. It was nice. I watched it, yeah. Or I've sent the thing, the scores to the Google form. थैंक यू श्रेयांश. नाउ दैट यू सेड दैट, यहाँ पे सबका बैठे बैठे बीपी तो हाई हो चुका है. बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट से दैट आई होप एवरीबडी हैड अ ग्रेट टाइम हियर. आई होप मैं सबको बहुत अच्छे से परेशान कर पाया हूँ. एंड as and when we finally calculate all the scores, before we move on to that, I want all of you to have a look at the after movie of Sympulse, just to get a glimpse of what Sympulse is all about. Let me assure you, kitni bhi bari video dekh lo, every time you'll get goosebumps. Thank you so much, Mishkaya. Thank you so much. Guys, let's have the video. I looked in your eyes, gave you my weakness. Fall from the heights, you've got me dreaming. And I've been thinking about you when you're gone. Even though you're gone in spirit, eternity's not so long. Eternity's not so long. Eternity's not so देखता है क्या तू बंद आंखों से दिल की, तुझे क्या पता के पैसे के यार यहाँ पर सभी जल जाएगा, टूटेगा तेरा दिल यहाँ पर, तू समझा नहीं के बिकता है साला प्यार यहाँ पर सही. ये जिंदगी है, समझना कोई, ये जिंदगी है, समझना कोई, ये जिंदगी है. कैसी पहेली वाओ, मेरा बस इसके बाद एक ही चीज है यार, प्लीज
प्लीज सिंपल्स ऑफलाइन करा दो, नहीं बैठ के करना मुझे घर पे सिंपल्स। ये ओसी को है, वैसे जो भी ओसी का यहाँ पे बैठा हुआ है, कुछ भी करो ऑफलाइन कराओ। वैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे और वैसे स्टॉल कर सकता हूँ और आप लोगों को बहुत ज्यादा और पीपी हाई कर सकता हूँ, बट ठीक है यार, सब अपने दोस्त हैं। सो लेट अस हैव अ फ्यू फाइनल वर्ड्स फ्रॉम श्रेयांश एंड वील मूव ऑन टू आवर रिजल्ट्स। श्रेयांश? I think I'm done only. Do you guys want to speak? Ronit, I think it'll be fair if you perform something, since others didn't get to watch you. Um, I'm really not sure which bit to do here, but would you like suggest Just do which that. part should I? Sorry? Yeah, do that transition. Do the transition wala part, where you transition to being a servant. Okay, so I'll just give you all a brief. So it was a scene from Tamasha where Ved, the main character Ranveer Kapoor, he's on the brinks of having the realization that he's about to follow his dreams. So he says this very short monologue about the real want of the world, कि अगर पैसा ना होता तो कैसा होता. So he just says it in a way of a servant. So it goes like, one second, just give me some time. मालिक मालिक, मैं वही टाई पहन के, वही स्टेज चढ़ के रोज आऊंगा आपके दरबार, रोज वही करूंगा जो फिर से किया है, वो फिर से करूंगा जो फिर से किया है. So that was the servant's part. ये एक ही गले से निकली ना आवाज? हाँ, एक ही गले से निकली ना आवाज? हाँ. नहीं भाई, रूम टूर दिखा मुझे रूम में देखना है, कोई और था ना? अच्छा, प्राइवेट चैट पे करने के बाद, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ओके, डन, ग्रेट. नाउ दैट वी आर थ्रू, it is time for us to have a look at the final scoreboard. Before we announce the results, I just want to say once again, I cannot repeat myself, I cannot emphasize on the fact anymore that all of you have done a commendable job, and definitely this was worth missing all the clubbing Gediya Marne ke plans jo bhi the, it was worth missing everything. Kudos guys, wonderful job. Let's have the scoreboard. On the 9th position with 6.5 points, we have Viraj Jain from Sympulse Center for Management Studies. On the 8th position with 6.5 points, we have Swastik Mohan from Sympulse Center for Management Studies. On the 7th position with 6.5 points, we have Adar Sethi from Sympulse Center for Management Studies. On the 6th position with 7 points, we have Mishka Tillu from Sympulse Center for Management Studies. On the 5th position, we have Yeshi Shah with 7.5 points from SCMC Pune. On the 4th position, we have Avantika Prateek with 7.5 points from Sympulse Center for Management Studies. Congratulations, everyone. As an actor, it is a really, as an actor myself, it was really a privilege to see all of you perform. बहुत अच्छा लगा मुझे. And yeah, that's it. Finally, we have reached the point for which all of you have been waiting for. We have with us our top 3 finalists. In no particular order, we have Vidisha Tayade, Harshit Chabra, and Ronit Bami. In the 3rd position, चलो पहले आने दो सबको, थोड़ा और सस्पेंस बिल्ड करेंगे, तो आने दो पहले सबको, पूरा फिल्म फेयर बनाना है इसका अभी. Do we have Ronit with us? Yes, great. On the 3rd position with 8 points from Sympulse Center for Management Studies, we have Harshit Chabra. Congratulations, Harshit. Very well done. Again, let me reiterate, doing that dialogue is not easy. Very well done. Kudos. Finally, we have our top 2 finalists. We have Vidisha and Ronit. The winner is Vidisha or Ronit. Let's find out. Build up ले रहा है मुझे. The winner of Lights Camera Action
2022, sponsored by Caplots, powered by our official SaaS partner Sassafras, in association with Cornitos. From SSC Pune with 9 points, we have Ronit Bami. Congratulations, Ronit. What a wonderful job. Nobody got to see your video, but in those 10 seconds, I could figure out that you have done a phenomenal job. Come on, Ronit, the stage is all yours. De do film fest speech, de do Oscar speech. बहुत मजा आया. Thank you, everyone. Thank you, Rebanta, for being such a wonderful host. Thank you. मुझे पता ही नहीं लगा कहाँ 1 घंटा चले गया. And thank you, Shreyansh, for your valuable comments. I'll surely next time keep the fan switched off. Thank you. Great. And I even want to just tell everyone, like, I loved everyone's performance more than mine, in fact, because it was really amazing to see everyone bringing out some amazing content. Even like when I was preparing for my monologue, I thought I'll do the Heather one, but I thought कि नहीं, मेरे से मतलब मैं करूँगा तो मतलब मेरे को finals तक तो छोड़ ही दो, हो ही नहीं पाएगा. But Adar and Harshit, both the people who did Heather, was just fantastic. And even Yeshi, during her monologue, I didn't even think of anything else. It was so good. So all the participants, I really enjoyed your performance. Thank you. Thank you so much, Ronit. It was really, really, really wonderful having you here. Let us now have a look back at the final scoreboard again and the final positions bagged by our participants. Ladies and gentlemen, let us not forget our first runner-up with 8.5 points from Sympulse Center for Management Studies. We have Vidisha Tayade. Congratulations, Vidisha. De do, aap bhi film fest speech de do. ओके मुझे लगता है विदिशा ने इतना बोल दिया ना लड़कों को कि हमारा जो टेक इंचार्ज है वो भी लड़का है, को ना बोले नहीं देना चाहता. बोलवा दो यार. कुछ नहीं होता. एक्टिंग थी वो. Yes. Thank you so much. I just don't know what to say, but thank you, Shreyansh, and thank you, Rebanta, for being such a nice host. Thank you so much. That's it. Great. And let me ask again. First time है ना पक्का? Okay then. Okay. Great. With this, we come to an end of the event for today. And I would like to thank each and every one of you for being such an amazing audience. We would also like to thank our participants for making this event a grand success. I would like to extend my gratitude to our judge who spared his time out of his busy schedule and for making this event a truly wonderful one. And most importantly, let us not forget our official media partner, Ishq FM, and our associate sponsor, PokerStars, for sponsoring our event. Thank you so much, everybody, for joining and making this event a truly memorable one. This is your host, Rebanta Saha, signing off for the day. Thank you.